डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 में खुश आमदीद। सबसे पहले हम लेक्चर 1 की कुछ रिव्यू करेंगे, उसके बाद लेक्चर 2 पे बात करेंगे डिटेल में। What we have covered in lecture 1, we covered the evolution of economics, how economics came into existence, and then we have discussed the definitions of economics. 3 definitions of economics we have discussed. Different school of thought ने जो economics की दी हैं, like we have discussed the definition given by Adam Smith, and then by Marshall, and then by Robbins, and the latest definition given by Robbins, which is the modern school of thought, is applicable these days in economies. Like the definition was that economics is a science which deals with multiple ends and scarce resources. Resources are limited on one side, and wants are unlimited. So how society can maximize satisfy maximum desires with the limited resources. Then we have discussed the scarcity of resources in terms of society, how society can manage its scarce resources. And after that we have discussed the basic principles of economics. We have discussed the 10 principles of economics in detail, and then finally we discussed the how economics is useful for the manager. So we have discussed different ways in which manager can get benefit from economics. Like हमने देखा कि economics help करती है managers को in making different business decisions, because as a manager, as a businessman, you have to make different decisions. बहुत सारे अहम फैसले करने होते हैं। तो if as a manager आपको economics का इल्म है, आपने economics के concept पढ़े हैं, तो आप easily business decisions कर सकते हैं. You can make easy, rational and corrective business decisions. It is also helpful for policy makings. So you design policies for the organizations. So economics can benefit you in help you in designing policies for the organizations. It also help how you can use effectively and optimally resources available to you, and as well as in the economy. So this was the overview of the previous lecture. अब dear students हम lecture 2 की तरफ चलते हैं. Lecture 2 basically has 2 parts. In the first part we will cover introduction to business economics. ये कुछ पिछले lecture, पहले lecture का कुछ हिस्सा है जो कि हम अब cover करेंगे, and then we move to the second part. तो दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे लेक्चर के दूसरे हिस्से की, जिसमें हम बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड की. वी विल टॉक अबाउट मार्केट फोर्सेस, वी विल टॉक अबाउट सप्लाई एंड डिमांड. इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, वी कंटिन्यू विद द प्रीवियस लेक्चर. नेक्स्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट. हाउ इकोनॉमिस्ट थिंक and how we can follow economists and in our daily life, in our business environment, in our economy. So economics basically trains you to think in terms of alternatives, because different alternatives are available to the individual. बहुत सारे मुख्तलिफ आपको alternatives available होते हैं, and you have to decide which alternative you are going to choose and which is best for your organizations, best for your economy. And economics helps you and trains you to choose one of the best alternative for economy. Then it also trains you to evaluate the cost of individuals and social choices. You can compare the cost of different options available to you at individual level as well as society level. Moreover, economics also trains you to examine and understand how certain events and issues are related.
किस तरह मुख्तलिफ इशूज़ को आप रिलेट कर सकते हैं, लाइक जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इकोनॉमिक्स ट्रेन यू हाउ यू कैन रिलेट दीज टू फिनोमिनास। इसी तरह हमने बात की मनी सप्लाई की और इन्फ्लेशन की, हाउ यू कैन रिलेट money supply and inflation in the economy. So economics help us, trains us to develop and understand relations among different parameters in the economy. Now, what is the economic way of thinking? How economist thinks? Basically, economist thinks analytically and objectively. So economists have certain objectives to achieve, and they use analytical methods to achieve those objectives. Moreover, economists also use scientific method to explain the issues, explain the phenomena. So what is scientific method basically? Scientific method basically, we start from the observation, we observe, then develop theories, and then we collect data, analyze that data and come up with the result, जिसमें हम बताते हैं कि वो जो थ्योरी हमने बनाई है वो सही है या नहीं है. तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड, वी मूव साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप्स. वी स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन. आप ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज एन इशू इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड देन यू डेवलप थ्योरी एंड देन कलेक्ट इंफॉर्मेशन, डाटा, उस डाटा को एनालाइज करते हैं, देन ट्राई टू प्रूव दैट theory or whether that theory is true or not. Then we like to talk about the role of assumption in economics. As we know that economist makes assumption in order to make the real world easier to understand. So all of the models developed are theories by the economist. These are based on assumptions. For example, when we talk about international trade, when we talk about open economy, just to simplify the problem, just to understand the problem, just to make easier to understand the problem, we assume that the world consists of only two countries, that country 1 and 2, so the trade can take place between the two countries and that represent the whole world. So just assume that the world consists of two countries, and to make the concept easier and to make easily understandable for the individual, for the society, for the country. So economists use different assumptions to answer different questions, like if we would like to explain the relationship between money and inflation, so we have to make certain assumptions. If we want to explain the relationship between growth and poverty, again economist को कुछ assumptions बनानी पड़ती हैं to explain this relationship between poverty and growth. So रोल ऑफ assumption is very strong, बहुत मजबूत है इकोनॉमिक्स में. मोस्ट ऑफ द मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो थ्योरीज हैं, दे आर बेस्ड ऑन assumptions developed by the economist behind those theories and models. So assumption, the role of assumption is very very important, बहुत ज़्यादा अहम है in economics for economists also. Now for an example to explain how economists think, like we just briefly explain, I just briefly explain to you the two models to understand the world, how the world behaves, how the economy behaves, how economy work. So I just give you an example for two basic models of economics, and those are number 1 the circular flow diagram, and number 2 the production possibility frontier. So first I would like to explain the first model, which is very simple and tells us how the economy works, how the individual works in the economy, how we behave in the economy. That is the circular flow diagram. तो स्टूडेंट्स अब सर्कुलर फ्लो डायग्राम की बात करते हैं, एंड हम बताएंगे, इसमें कोशिश करेंगे आपको बताने की कि किस तरह एक इकॉनमी काम करती है,
किस तरह रिसोर्सेज मूव करते हैं, बिकॉज यू नो देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल्स इन द इकोनॉमी इन द कंट्री. सो वी हैव टू बी सिलेक्टिव and we have to develop models how an economy can work. कैसे इकोनॉमी काम कर सकती है इतने बड़े लोगों में, इतनी बड़ी तादाद पॉपुलेशन में, राइट. अगर इस हम सर्कुलर फ्लो की बात करें, इसको देखें तो इसके 4 sides हैं. on one side, on the right side of this circular flow, there are households. Household buy and consume goods and services, and they own resources, they own factors of productions, they own factors and sell these factors of production to the firms. On the left hand side we have the firms. Firms क्या करती हैं, उनकी क्या responsibility है? Firm produce goods and services and then sell these goods and services to the market. The second thing which they do, they hire and use factors of production to produce goods and services. On the top we have market for goods and services, and on the bottom we have factors of production. So we have 4 parameters. On the right side of the diagram we have household, on the left side we have the firms, on the top we have markets for goods and services, on the bottom of the diagram we have markets for factors of production. Now we will try to explain, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये किस तरह एक इकोनॉमी काम करती है, how this flow, circular flow works. So we start from the households. Household provides factors of production in the form of land, labor and capital to the firms, and firms use these factors of production in the production process and produce goods and services and supply it to the market for goods and services, right. So this is the first circle which we have completed. I repeat it again that we started from the household. Household क्या करते हैं, वो अपने जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ये सप्लाई करते हैं मार्केट फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. They supply factors of production to the firms through markets of factor of production, and then firms क्या करती हैं, they use these factors of production and produce goods and services, and then supply these goods and services, ये मुहैया करती हैं चीज़ों को, services को to the household through market for goods and services. So this is the first circle of economy which we have completed. This is the flow of input and output, how inputs are supplied from household to the firms through market factor of productions, and then how firms supply goods and services to the household from markets for goods and services. Then after this, when this circle completes, when household purchases goods and services from the market for goods and services, and this will become their spending, right. This spending will become the revenue for the firms, right. Now firms will get the revenue, and then they provide reward to the factors of production, right, in the form of wages for the labor. लेबर के लिए wages provide करते हैं, capital के लिए rent provide करते हैं, और the organization will get profit as terms of its service, right, through markets for the factor of production, and this will become the income of the household. So this is the second circle which we have completed. So economy जो है इस circle के इर्द गिर्द घूमती है. इस चार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं हम. लाइक अगेन मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू करूंगा. वी कैन रिव्यू दिस सर्कुलर फ्लो. तो हमने जैसे कहा कि ऑन द राइट साइड पे हमारे पास हाउस होल्ड्स हैं, ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द फर्म्स, on the top we have market for goods and services, on the bottom we have market factor of production. We started that household जो है they provide different factors of production to the firms through market of factors of production, and then what the firms will do with these factors of production, they use these factors of production and they produce goods and services and supply it to the product market from where the firms households buy those goods and services. When the household buy these goods and services, they have to spend some money, so the spending of household will become
the revenue of the firms, and the firms provide reward to the factors of production, and that will become income of the household. So this is how the economy works. उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा. अगर मज़ीद डिटेल अगर आप इसको काइंडली if you look at the book, and if you cannot understand, we can again repeat in the next class. The other example of a basic model of economics is the production possibilities frontier. Now how we define, इसकी definition क्या है? Basically, production possibilities frontier is a graph that shows the combinations of output and the economy that the economy can produce given the available factors of production and the available technology. So ये जो ग्राफ है जो आपको ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, अगर आप देखें on y axis economics में we have two axes normally, y axis and x axis. तो एक वेरिएबल को हम x एक्सिस पे मेजर करते हैं, दूसरे को हम y एक्सिस पे मेजर करते हैं. अगर आप ग्राफ में देखें तो on y axis we have the quantity of computer produced, on x axis we have the quantity of cars produced. Now if we use the combinations of different quantity produced of computers and cars, we can get the production possibility frontiers, and these different combinations are produced by using the available factors of production and the technology. If we take any point, अगर हम कोई एक point लेते हैं इस ग्राफ पे, so we'll see कि how much computers are produced, how much cars are produced. Suppose if we are at the point A, then at point A 2000 cars are produced and 700 cars are 2000 computers are produced, 700 cars are produced. Similarly, any other point on the curve will tell us a different combination of the products produced. Like at point C, अगर आप देखें यहाँ पे 2200 computers are produced and 600 cars are produced. So what this explains basically, if we see that the quantity of computer produced has increased from 2000 to 2200, so in order to produce more computer, the firm has to reduce the production of cars from 700 to 600. So if the firm want to produce more of a product, he has to sacrifice some unit of the other product. अगर किसी फर्म ने एक चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा पैदा करना है, कुछ यूनिट ज़्यादा बनाने हैं, तो दूसरी चीज़ के कुछ यूनिट कम करने पड़ेंगे, so that to remain on the same curve, उसी ग्राफ पे रहने के लिए. अब हम दो एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करते हैं. अगर if we talk about point B on the graph, तो B पे क्या सूरत हाल है? यहाँ पे 1000 कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहे हैं और 300 कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं. बट अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये पॉइंट जो है, दिस इज बिलो देन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये उससे नीचे है. तो इट मीन्स फर्म के पास अभी कैपेसिटी है, फर्म हैज़ ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर देन पॉइंट बी. It can produce more units of car, more units of computers. So he can go up to the curve, any point on the curve, so he can produce more of both products, computers and cars. So this any point below the curve, basically this tells us that there is a capacity within the firm to produce more of both products. Now we can talk about another extreme point, which is point D. What is happening here? Now this point, ये जो है, this point is above than the production possibility curve. What it means, what it shows, क्या जाहिर कर रहा है ये ऐसा पॉइंट है जो कि प्रोडक्शन, जो फर्म की कैपेसिटी में नहीं है. फर्म हैज़ नॉट ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दिस एट दिस पॉइंट, बिकॉज इफ द फर्म वांट टू प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट, they have to borrow, they have to use other resources for the production process, right? So it is better. तो what we can say that, क्या हम इसमें नतीजा खस कर सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर होगा, वो फर्म की कैपेसिटी भी नहीं है, तो फर्म को वो उस पॉइंट पे प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए.
a firm should remain within its capacity, within its limits. So either the firm should produce any point on the curve or below the curve. So we have explained in detail the production possibility frontier. So this is a curve basically, or this is a graph which shows the combination of output that can be produced in the economy by using the available factors of production and the available technology in the country, right? So we have described in detail. Next बात करते हैं हम about the economist. Again we continue with this lecture. Economist as a policy advisor. How we can explain this term? Economist जब दुनिया को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो दे आर कॉल्ड साइंटिस्ट, उनको साइंसदान कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे आर एक्सप्लेनिंग दैट इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल lead to inflation in the economy, right? So when economists are explaining this phenomena, it means they are known as a scientist. लेकिन जब economists कोशिश करते हैं to change the world, then they are known as a policy advisors. So the policy advisor का क्या रोल है? जब economists policies देते हैं हुकूमत को कि if the government want to increase the employment in the country, if government want to reduce poverty, गुर्बत को कम करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, तो जब इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ देते हैं बना के कि दीज आर द पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती हैं, इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है. When they are advising the government to stabilize the economy, उस वक्त जो economist, they are known as a policy advisor. Last part of the first this section is about the positive and normative analysis. How we can differentiate these two terms. What are the positive statements? What are the normative statements? Now, first we see what is positive statements. Now, positive statements are statements that attempts to describe the word as it is, and these are known as the descriptive analysis. So positive statement ऐसी statements जिसमें हम बताते हैं as it is, explain करते हैं दुनिया को, so then उस statement को हम positive statement कहते हैं. For example, an increase in the minimum wage will cause a decrease in unemployment among the least skilled worker. So this statement is a positive statement. Another statement, for example, higher federal budget deficit will cause interest rate to increase, right? अगर budget deficit बढ़ता जाएगा, खसारा बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा? Interest rate क्या होगा? Interest rate बढ़ जाएगा, right? So this is a positive statement. Example of positive statement. Now, what is normative statement? Normative statements are statements about how the word should be, and this kind of analysis is called perspective analysis. So when the economists like to tell the government that this is how the word should like, then those kind of, and they give statements to the government, to the economy, so then those statements are known as the normative statements. And the example of normative statements are, suppose the income gains from a higher minimum wage are worth more than any slight reduction in employment. So this kind of statement is known as the normative statement. Another example, statements, government should be allowed to collect from tobacco companies the cost of treating smoking related illnesses among the poor. So if we have such kind of statements by the economists, so these are known as the normative statements. So we end up with the first part of this lecture, and the last I would like to tell you one more thing, add more thing in this part. Like most of the time economists disagree with each other. If you see the literature, if you see the papers, if you see the articles, so
most of the time we are criticizing, economists are criticizing each other, तनकीद करते हैं, एंड उसके बेनिफिट्स भी हैं, फ़वाइद भी हैं. जब आप तनकीद करते हैं तो कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, जब नई चीज़ें सामने आती हैं तो उस पर रिसर्च की जाती है, तहकीक की जाती है, नई थ्योरीज बनती हैं, नए मॉडल बनते हैं, राइट. सो इकोनॉमिस्ट tries to disagree with each other to develop more theories, more models, and to innovate in the economy. So this ends with the first part of the lecture. यहाँ पे हम first part ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे हम जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उसके फर्स्ट 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड दोज 2 chapters are the introductory chapter. Like first chapter is about the principles of 10 principles of economics, and the second chapter is about how economists thinking like an economist, and how we can think like an economist. So we end up with the first 2 chapters of the book, and now I will go further to the second part of our today's lecture. Second lecture के दूसरे हिस्से में जाते हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे मार्केट फोर्सेस की. We will talk about market forces of supply and demand. Economists जो हैं आप सुनते होंगे, most of the time they use these 2 words, supply and demand. Always they are talking about supply and demand. So this is a very important concept, and I will try to explain in detail. So what we are going to cover in this market forces of demand and supply, the sequence of our presentation will be like markets and competition, then demand curve, market demand versus individual demand, and finally we would like to explain how the demand curve shifts, what are the shifters of the demand curve, क्या determinants हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं और डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं. तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन. तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, मार्केट एंड कंपटीशन. नाउ सप्लाई एंड डिमांड आर द 2 वर्ड्स जो कि आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे, जो कि इकोनॉमिस्ट ऑफन यूज करते हैं, एंड दीज आर द 2 फोर्सेस दैट टेल्स अस हाउ द मार्केट इकोनॉमी वर्क्स, कैसे काम करती है एक मार्केट इकोनॉमी. सो दीज आर द 2 फैक्टर्स, पैरामीटर, वेरिएबल्स, सप्लाई एंड डिमांड, जो कि हमें बताते हैं कि मार्केट कैसे काम करती है. और मॉडर्न जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इज ऑल अबाउट सप्लाई, डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम. सो द मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवॉल्व अराउंड these concepts. सप्लाई के इर्द गिर्द घूमती है डिमांड, एंड हाउ वी कैन ब्रिंग these forces together, किस तरह इनको इकट्ठा कर सकते हैं और मार्केट में इक्विलिब्रियम ला सकते हैं. तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड और द मार्केट फोर्सेस. बिफोर डिस्कसिंग द लॉ ऑफ डिमांड, या लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताएं, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट the markets and competition. Now what is market basically? How we define market? कैसे define करते हैं, कैसे explain करते हैं? A market is a group of buyers and sellers of a particular good or service. यहाँ पे buyers, group of sellers मिलते हैं, interact करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस एक conditions को, उस जगह को हम market का नाम देते हैं. And the terms demand and supply refer to the behavior of the people as they interact with one another in the market. सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं दो, सप्लाई और डिमांड, जब बायर एंड सेलर मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो देन and these two terms explain the behavior of the individuals in the market. Now buyers determine the demand of the product, sellers जो हैं वो determine supply of the product. तो सेलर जो है चीज़ को सप्लाई करते हैं मार्केट में, बायर्स जो हैं डिमांड करते हैं, और दोनों इंटरेक्ट करते हैं, और दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स. मार्केट इस तरह काम करती है. देन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज कंपटीशन. व्हाट इज़ कंपटीशन, व्हाट इज़ ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं. एज वी नो दैट इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स होते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. So when there are large number of buyers, large number of sellers, and they interact with each other, so that kind of market is known as the perfectly competitive market. तो जब बहुत ज़्यादा buyers होते हैं, बहुत ज़्यादा sellers होते हैं, तो they have to take the price as a given.
जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो इसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर कोई एक सप्लायर प्राइस को ऊपर या नीचे करता है, जो सेलर जो है एक ऊपर या नीचे करता है, जो बायर्स हैं दे कैन मूव, दे कैन गो टू अदर सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज बहुत सारे सेलर्स जो हैं सेम जगह पे लोकेटेड होते हैं, वहीं पे प्लेस्ड होते हैं। तो दोनों जो बायर्स एंड सेलर दे कैन नॉट चेंज एंड दे हैव टू टेक द प्राइस एज ए गिवन। There are some other forms of the market, एक तो perfectly competitive market है, और the other form of the market जो कि available होती है buyers को, sellers को, that is monopoly। अब monopoly क्या चीज़ है? monopoly जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात की कि जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए when there is only single producer of the product and seller of the product in the market, तो उसको हम monopoly की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान इकानमी की बात करें, द वापडा has a monopoly। वापडा जो है बिजली, there is only one organization which is producing electricity and supplying to the economy or to the country। So monopoly when there is a single seller and large number of buyers, so that is known as the monopoly। And in this case monopoly में जो है seller has the complete control over the price। एक मुकम्मल इख्तियार होता है कीमत पे, जितनी कीमत ऊपर नीचे करना चाहे जो सेलर है मोनोपोली मार्केट में कर सकता है। उसके बाद ओलिगोपोली होती है, एक मार्केट की जो किस्म है, एक जो टाइप है। ओलिगोपोली क्या चीज़ है? व्हेन देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट, देन दैट सॉर्ट ऑफ मार्केट इज नोन एज द ओलिगोपोली मार्केट। With an oligopoly we can talk about duopoly when there are only two firms in the market, so that is known as the duopoly। The another sort of market or structure is, or the market available to the buyers and seller is monopolistic competition, in which there are many sellers and they produce slightly different product, differentiated product, just to create competition between the buyers, right? So each seller may set the price for its own product। So in this case again, so in monopolistic competition इसमें भी seller जो हैं अपनी मर्जी से कीमत को adjust कर सकते हैं। So this was the introduction of this second part of the lecture, like what is market, how demand and supply behave in the market, what is competitions, कौन सी मार्केट अवेलेबल हैं फर्म्स को, कौन सी मार्केट्स अवेलेबल हैं बायर्स को चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो नाउ वी कंटिन्यू विद लेक्चर एंड आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू द फर्स्ट फोर्स ऑफ मार्केट विच इज़ डिमांड, which is very important concept। Now how we define a quantity demand? Now quantity demand is the amount of a good that buyers are willing and able to purchase at certain price। So demand is the amount of a good, quantity demand is the amount of a good। एक quantity है, एक मिकदार एक चीज़ की जो कि buyer willing है ख़रीदने के लिए और उस ख़रीदने की इस्तात भी रखते हैं। They have the income also to purchase, they have money also to purchase that product। So when we say that the amount of good that buyers are able and willing to purchase at a certain price, that is known as the quantity demand। Now we explain this concept or the relationship between price and demand, कि price और demand का आपस में क्या relationship है, प्राइस किस तरह इफ़ेक्ट करती है, असरअंदाज होती है डिमांड पे, तलब पे किस तरह असरअंदाज हो सकती है। तो उसको एक्सप्लेन करने, उसको बताने के लिए हम बताएंगे लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड अब क्या चीज़ है? लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड फॉल्स when the price of good rises and vice versa। So law of demand tells us that there is an inverse relationship between price and quantity demand of a product if other things remains constant। जैसे कि अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि economists try to use assumptions when they want to develop models, law, theories। So here again we are using assumptions considering other things constant and saying that there is an inverse relationship between price and quantity demand। When price goes up,
quantity demand goes down, when price goes down quantity demand goes up. So जो डिमांड है और क्वांटिटी और प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है, उल्टा है. अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी. एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. नाउ हम इस लॉ ऑफ डिमांड को कोशिश करेंगे कि हम इसको एक टेबल से एक्सप्लेन करें और एक उस टेबल को कन्वर्ट करें ग्राफ में एंड ट्राई टू डिटरमिन ट्राई टू ड्रॉ द डिमांड कर्व. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि किस तरह हम एक टेबल के ज़रिए स्केड्यूल के ज़रिए हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस फिनोमेना और दिस लॉ ऑफ डिमांड. सो अगर आप देखें तो इस दो कॉलम्स हैं इस टेबल में. फर्स्ट कॉलम में we have taken the price of ice cream cone and second column में हम अगर आप देखें we have taken the quantity of cones demand. And now when the price of ice cream cones is $0, so the demand of the cone is 12, the quantity demand is 12. So if price goes up from 0 to 0.5 cents, the demand by law of demand, अभी जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है जिसकी बात की है, तो उसके वजह से जो प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है क्या है कम हो जाएगी फ्रॉम 12 टू 10, 12 से 10 हो जाएगी. इफ़ प्राइस फर्दर गोज अप, अगर प्राइस मज़ीद बढ़ती है 0.5 से $1 हो जाती है तो डिमांड फर्दर कम हो जाती है, तलब में मज़ीद कमी आ जाती है फ्राम 10 टू 8. इसी तरह प्राइस कंटिन्यू रहती है, बढ़ती रहती है फ्राम 1 टू 1.5, डिमांड फर्दर कम हो जाती है से 8 to 6, and if price further goes up from 1.5 to 2, the demand further goes down from 6 to 4, and so on. So if we look at this table, in this table, तो what we can conclude, क्या इससे नतीजा खस कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ रही है कोन की तो उसकी डिमांड कम हो रही है. तो एंड जब प्राइस, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी. तो दिस टेबल्स एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड टेल्स अस दैट द डिमांड एंड प्राइस, डिमांड एंड प्राइस आर इनवर्सली कोरिलेटेड विद ईच अदर. सो दोनों का उल्टा रिलेशनशिप है. अगर एक वेरिएबल में बढ़ता है, इंक्रीज होती है, तो दूसरे में कमी वाक़ होती है. तो दिस टेबल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड. इसी चीज़ को हम ट्रांसलेट करते हैं एक डायग्राम में, एक ग्राफ की सूरत में. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ के दो एक्सेस होते हैं, एक वाई एक्सेस और एक एक्स एक्सेस. एक एक्सेस पे हम प्राइस, वी टेक प्राइस ऑन वाई एक्सेस एंड टेक क्वांटिटी डिमांड ऑन एक्स एक्सेस. अगर आप देखें तो ऊपर आपको इस ग्राफ के ऊपर आपको टेबल भी नज़र आ रहा है, ताकि आप इन्हीं क्वांटिटीज़ को, इन्हीं फिगर्स को कन्वर्ट करके यहाँ पे आप टेबल ग्राफ बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हेन द प्राइस इज़ $0, at 0 price, what is the quantity demand? When the price of cone is 0, what is the quantity demand? Is 12, right? So when the price goes up from, so we got a point A here. If we increase the price from 0 to 0.5 cents, the demand goes down from 12 to 10. And if we join this point, if we draw a line from 0.5 to 10, we get another point which is point B, right? Similarly, if price further goes up from 0.5 to $1, so against $1 we have demand which is 8. So if we combine these two values, we draw a line against price 1 and quantity 8, we get point C here. Similarly, if we continue further from the price increases further 1 to 1.5, बढ़ेगी, उसके बाद इसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी है वो 6 है, तो इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो पॉइंट D मिलता है आपको. अगर आप फर्दर इसको प्राइस को बढ़ाते हैं फ्रॉम 1.5 to 2, अब 2 के अगेंस्ट जो क्वांटिटी है इज 4, so we get another point at price 2.5, the quantity is 2, so we get point F. And then finally at price 3 we get
zero quantity, which is very high price, and F we get the G point. So if we combine all these points from A, B, C, and E, F, G, so we get the demand curve. This is known as the demand curve. If we combine all point, इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाती है जो कि डिमांड कर्व कहलाती है. अब इस डिमांड कर्व को अगर आप देखें तो इसकी शेप क्या बता रही है, हमें इसकी शक्ल क्या बता रही है, क्या रिफ्लेक्ट कर रही है. दिस इज negatively sloped, downward sloping, right? What this tells us, that this tells us there is inverse or negative relationship between price and quantity demand. जब price बढ़ती है तो quantity demand कम होती है, जब price कम होती है तो quantity demand बढ़ती है. तो this curve is known as the demand curve. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा. मैं दोबारा बता देता हूँ. On y-axis we are measuring, we are taking price of the product, which is ice cream cones. On x-axis we are measuring quantity of the product, quantity demand of the product, which is ice cream cone again. So we have drawn all these points, like against the zero price we have 12 demand, we got point A, against price 0.5, हमारे पास क्वांटिटी डिमांड 10 है, हमें एक दूसरा पॉइंट मिलता है पॉइंट बी. देन अगेंस्ट 1 वी हैव ए पॉइंट सी, अगेंस्ट 1.5 वी गॉट पॉइंट डी. इसी तरह अगेंस्ट प्राइस 2 एंड क्वांटिटी 4 वी हैव ए पॉइंट ई. अगेंस्ट प्राइस 2.5 वी हैव ए quantity 2 and we got point F. And then at price $3 we got zero quantity and we get a point G. अगर हम इन points को मिलाते हैं A, B, C, D, E, F, G, will get a curve and which is downward sloping, negatively sloping, and this curve is known as a demand curve. इस curve को demand curve कहते हैं. और इसका जो shape है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ है, जो हम बताती है हमें कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो जो नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप है. Now this was the individual demand curve. The next concept is how we can differentiate, कैसे हम तफरीक कर सकते हैं between the market demand and individual demand. Now market demand is the sum of all individuals' demands for a particular good or a service, right? Agar suppose if market consists of 10 peoples, 10 individuals, and if you sum up the demand of each individual, that will give us the market demand. तो अगर 10 लोग हैं किसी मार्केट में और 10 लोग ख़रीद कर रहे हैं किसी चीज़ को, अगर 10 लोगों की आप डिमांड जो है, जो चीज़ ख़रीदी उन्होंने, अगर उनको आप जमा कर लेते हैं तो दैट विल गिव अस द डिमांड, मार्केट डिमांड. ग्राफिकली अगर आप इसको शो करना चाहें तो दोनों की जो शेप है दैट इज़ द सेम ऑफ कोर्स. द मार्केट डिमांड कर जो है वो भी उसी की तरह, लाइक ओ प्राइस क्वांटिटी डिमांड. सो उसी तरह market demand curve is also negatively sloped and downward sloping, and we are just summing up or adding the individual demands and getting the market demand. The remaining relationship between price and quantity demand is the same as we have seen in the individual demand curve. Now after after knowing the relationship between price and demand and law of demand and the demand curve and demand schedule, now we would like to know shifts in the demand curve. What are the parameters which can bring a shift in the demand curve, and how we can differentiate between the change in demand and the change in quantity demand. Whenever there is a change in the quantity demand due to change in the price of a product, so this change in demand is known as the change in quantity demand. So in this case जो consumer है, he will move along the demand curve from point 1 to point 2. So whenever there is a change in demand due to change in price, so consumer will move along the same demand curve. फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायग्राम में देखें, अगर एक
देखते हैं कि how there will be change in quantity demand due to change in the price of the product. At point A the price is $1, at quantity is 8, and at point B the price is 2, quantity is 4, so price has increased from 1 to 2 and quantity has decreased from 8 to 4, and we have the demand curve. Now suppose इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, how we have moved from point A to B. Suppose a tax that raises the price of ice cream, so government imposes a tax on the production of ice cream, and then it raises its price. So what will happen to the demand? जब प्राइस बढ़ती है टैक्स लगाने से तो क्या होगा, उसकी जो तलब है, जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगी from 8 to 4. So whenever there is a change in demand due to change in price, जब कभी डिमांड में तब्दीली आती है प्राइस की तब्दीली की वजह से, तो कंज्यूमर जो है उसी डिमांड कर पे रहते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है, बट ही रिमेन्स ऑन द सेम कर्व. सो दिस चेंज इज नोन एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. व्हेनेवर देयर इज a shift in the demand curve, whenever there is a change in demand curve due to some other factors or determinants of the demand, so then there will be a shift in the demand curve upward and downward. अगर प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर्स की वजह से, जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को शिफ्ट कर सकते हैं, डिमांड को चेंज कर सकते हैं, अगर डिमांड में तब्दीली उन फैक्टर्स की वजह से आती है, प्राइस की वजह से नहीं आती, तो देन देयर विल बी ए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उस फैक्टर में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. तो व्हेनेवर देयर इज ए शिफ्ट, there is a change in demand due to some other factor other than price, so then there will be a shift in the demand curve upward and downward. Now what are those shifters of the demand? कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि डिमांड को शिफ्ट कर सकते हैं? And so different people use different words for these factors. Some call shifts parameters in the that bring shift in the demand curve. Some call it shifters of the demand. Some call it determinants of the demand. तो कोई नाम भी आप इसको यूज कर सकते हैं, whether you can call it determinants or factors or shifters in the demand curve. Now one of the parameter, one of the variable that can influence buyers or demand is the consumer income. Now consumer income जो है is very important factor, is very important factor that can change the demand of a product. Now suppose अगर किसी बायर की, किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है from 10,000 to 15,000, तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है किसी चीज की बढ़ जाएगी. सो व्हाट विल हैपन टू द डिमांड कर्व? डिमांड कर्व के साथ क्या होगा? सो व्हेन इनकम विल गो अप, द डिमांड विल आल्सो गो अप एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड. जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो डिमांड हैज शिफ्टेड, इफ ओरिजिनल डिमांड कर्व इज सपोज D3, तो अगर हम इनकम को बढ़ाते हैं तो डिमांड कर्व जो है ना वो शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड. And similarly, if income further goes up, मजीद इनकम बढ़ती है तो डिमांड कर्व will further shift rightwards from D1 to D2. अगर इस डायग्राम को अगर हम देखें, नोट करें, तो in the center is the original demand curve, right? So this is in blue line is the original demand curve. Now suppose income has gone up, so what will happen to demand curve? It will shift rightward because इनकम के बढ़ने से जो कंज्यूमर की डिमांड है, जो बायर्स की डिमांड है, वो बढ़ जाएगी. जब डिमांड बढ़ेगी तो हम डिमांड को एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं, तो अगर हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिमांड में इंक्रीज हम शो कर सकते हैं. तो इस जो ब्लू लाइन से राइट साइड पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, और दिस विल टेल अस दैट देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू द इंक्रीज इन इनकम. अगर अब हम वाइस वर्सा दूसरी साइड पे देखें कि जब इनकम कम होगी तो क्या होगा, द डिमांड कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स
और ये जो लाइन आपको बता रही है नीचे जब आप आते हैं फ्रॉम D1 to D3, तो वाई इट शिफ्ट डाउनवर्ड, क्योंकि हमने कहा कि इनकम कम हुई है, डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड जो है एक्स एक्सिस पे मेजर होती है, तो इफ़ वी कम्स टूवर्ड्स 0 तो डिमांड इस साइड पे कम होती है, इस साइड पे बढ़ती है, सो द कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड्स और डाउनवर्ड. सो इनकम इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर द शिफ्टर इन डिमांड. जब कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ती है, जब बायर्स की इनकम बढ़ती है, तो क्या होता है, डिमांड कर शिफ्ट कर जाता है राइटवर्ड. जब इनकम कम होती है तो डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है. तो दिस वाज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. नाउ प्राइस ऑफ we'll talk about another concept when we are discussing the income. जब हम इनकम की बात करें कि इनकम कैसे डिमांड और तलब को इफ़ेक्ट कर सकती है, तो यहाँ हम बात करेंगे नॉर्मल गुड की और इन्फीरियर गुड की. बिकॉज यू नो जब इनकम का जो इफ़ेक्ट है नॉर्मल गुड पे पॉजिटिव है, और जो इनकम का इफ़ेक्ट ऑन इन्फीरियर गुड है इज़ नेगेटिव. तो अगर आप पहले डायग्राम में देखें विच इज़ अबाउट द नॉर्मल गुड, अगर आप कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड विल आल्सो इंक्रीज. नाउ द कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड्स, राइट. बट इन केस ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट and the product which is not in good quality, right, so अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो what will happen to its demand, उसकी तलब पे क्या असर पड़ेगा. तो इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड जो है उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी. अगर आप नीचे वाले ग्राफ में देखें, द कर्व हैज शिफ्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम D1 to D2. सो हमने ये क्या नतीजा अखज़ किया कि जब कभी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, उसमें तब्दीली आती है, तो हम देखते हैं कि कौन सी अशिया हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं जिनको ये मुतासर कर सकती है. तो हमने ये देखा कि जो नॉर्मल गुड्स होती हैं आम लोग इस्तेमाल करते हैं, एवरीबॉडी इज़ यूजिंग दैट प्रोडक्ट, सो इन दैट केस जो इनकम का इफ़ेक्ट है उसकी डिमांड पे पॉजिटिव है. इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम D1 to D2. और अगर इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो जाती है. बट इन केस ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट, इंफीरियर गुड, द इफेक्ट ऑफ इनकम इज नेगेटिव ऑन इट्स डिमांड. जब इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है. लोग चाहते हैं, कंज्यूमर चाहते हैं कि वो नॉर्मल प्रोडक्ट खरीदें इंस्टेड ऑफ एन इंफीरियर गुड, राइट. सो नॉर्मल गुड की सूरत में इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव होता है और डिमांड बढ़ जाती है और कम हो जाती है इनकम के कम होने से. और इन केस ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट द इफेक्ट इज नेगेटिव, द चेंज ऑफ इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव ऑन डिमांड. So now we'll move to the other shifters or determinants of demand. The second shifter is the price of related good. Now in this case we have two sorts of goods, two sorts of product. One, those goods which have substitutes, जिनके आप जो मुतबादिल अशिया अवेलेबल हैं, और दूसरी जो किस्म है अशिया की वो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, लाजिम मलजूम जिसे हम कहते हैं. कुछ अशिया ऐसी होती हैं जिनको आप दोनों को इस्तेमाल करना पड़ता है और लाजिम मलजूम होती है, एक चीज़ को आप अकेले में इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम जब इनकी एग्जांपल्स की बात करें, मिसाल की बात करें, तो व्हाट आर द गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट टी एंड कॉफ़ी, these are the two substitutes. You can take tea or you can take coffee. Similarly, orange and apple, these are the two substitutes. Similarly, another example like rice and wheat. चावल जो हैं गंदम का सब्सिट्यूट हो सकते हैं. अगर आप गंदम की कीमत बढ़ गई है तो you can switch or you can change your demand, you can consume more rice. Now what are the goods which are known as the complementary goods? Complementary goods are those goods which are when the price of one good will go up, the demand of the other good will also will go down. So for example,
विच आर द कम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्या एग्जाम्पल है, कौन सी गुड्स ऐसी होती हैं जो कि लाजिम मलजूम होती हैं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट कार एंड पेट्रोल, सो दीज टू गुड्स आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स, यू कांट यूज car without petrol. If we talk about this pen, so ink and pen are the two complementary goods. We cannot use pen without ink, right? So whenever, so we'll talk about the effect of change in the price of good on both substitute and complementary separately. अलहदा से हम बात करते हैं. पहले हम बात करते हैं कि किस तरह जब गुड सब्स्टिट्यूट होती हैं, एक दूसरे का नेमुल बदल होती हैं, अगर उनकी प्राइस कम या ज़्यादा होती है तो किस तरह उनकी डिमांड मुतासर होती है. सपोज अगर एक टू गुड्स आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स, और अगर काफ़ी और टी की हम बात करते हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ काफ़ी गोज अप, अगर काफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होता है, टी की डिमांड को क्या होगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज काफ़ी की प्राइस बढ़ी है एंड लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस जिस चीज़ कम हो जाती है तो काफ़ी की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम होगी और लोग जो है अपने आप को डाइवर्ट कर लेंगे, अपनी कंजम्पशन को डाइवर्ट कर लेंगे टूवर्ड्स टी, तो दे स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर टी इंस्टेड ऑफ काफ़ी बिकॉज इट्स प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. तो जब काफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो काफ़ी की डिमांड कम होगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और उसका जो सब्स्टिट्यूट है विच इज़ टी, तो टी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. व्हाट वी कैन कंक्लूड, हम क्या इसमें अखज़ कर सकते हैं कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर एक की कीमत बढ़ती है, एक चीज़ की कीमत बढ़ती है तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है. तो इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब दो अशिया आपस में मुंसलिक होती हैं तो उनमें किसी एक चीज़ की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है. अब हम बात करते हैं कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कि हाउ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाउ द प्राइस ऑफ ए कम्प्लीमेंट्री गुड कैन इफेक्ट द डिमांड ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट. सपोज हम बात करते हैं अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा, कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जो उसकी जो यूज़ है पेट्रोल का, उसकी जो डिमांड है पेट्रोल की क्या होगी, कम हो जाएगी, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड की वजह से रिलेशनशिप जो है प्राइस ऑफ पेट्रोल और उसकी डिमांड में क्या है, उल्टा है, नेगेटिव है. जब प्राइस बढ़ेगी पेट्रोल की तो उसकी कीमत क्या होगी, उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी. जब उसकी डिमांड कम होगी तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली उसकी जो कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, रिलेटेड प्रोडक्ट है, लाजिम मलजूम प्रोडक्ट है, वो क्या है, कार है, तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी. तो इसमें हमने क्या नतीजा अखज़ किया कि जब एक कम्प्लीमेंट्री गुड की और द रिलेटेड प्रोडक्ट्स की जो लाजिम मलजूम प्रोडक्ट है उसमें से अगर किसी एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम होती है. लेकिन हमने देखा सब्स्टिट्यूट केस में, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक की अगर कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है. तो इफ़ द प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट्स, एक दूसरे का नेमुल बदल है, और उनमें से अगर किसी एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर दो चीज़ें लाजिम व मलजूम हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं, उनमें से किसी एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है. सो हाउ दिस फिनोमेना एक्सप्लेन in terms of graph, the similar, if we can draw these two axes, on y axis we measure the price, here we measure the demand. Now this is the demand curve, original demand curve, right, D1. Now suppose if the price of a product which is substitute, जैसे कि हमने कहा कि टी और काफ़ी की हम बात कर रहे थे, अगर काफ़ी की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या फर्क, उसके दूसरी की डिमांड क्या फ़र्क पड़ेगा, टी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. तो डिमांड का शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, राइट साइड पे. सो D1 हम इसको कह सकते हैं. इसी तरह अगर काफ़ी की कीमत कम होती है तो क्या होगा, जो टी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, बिकॉज हमने कहा कि जब गुड्स एक दूसरे में से मुंसलिक होती हैं, एक दूसरे का नेमुल बदल होती हैं, तो उनकी प्राइस और डिमांड का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है. तो इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट से इसकी डिमांड यहाँ पे आ जाएगी, नीचे D2 पे आ जाएगी, राइट.
इसी तरह इसी को एक्सप्लेन आप दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, दूसरा जो सीखा हमने कम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कि अगर एक किसी कम्प्लीमेंट्री गुड जो लाजिम मलजूम चीज़ें हैं उनमें से किसी एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की जो डिमांड है कम हो जाती है, तो डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर एक चीज़ की कीमत कम होगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड कर्व राइट वर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैन इफेक्ट और अल्टर द डिमांड ऑफ द इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट। इसमें हमने दो तरह की चीज़ें देखी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निर्मूल बदल होती हैं, सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि कम्प्लीमेंट्री होती है। दोनों में whenever there is a change in price of one product, it affects the demand of the other products. In case of substitute, the effect is positive. In case of complementary, the effect is negative. So this was the second determinants of demand. Now we'll come to the another determinant of demand, which is taste. Tastes of consumer can also change the demand or can also shift the demand of the demand curve. कैसे? अब if the consumers change the taste of using a product, of course उसकी डिमांड क्या होगी? इफेक्ट होगी, डिमांड कम होगी। सपोज कि आप जो you have changed, you are wearing like for example clothes of a designers, right? And if you have changed the taste, you want to change the designer, अगर आप डिज़ाइनर को चेंज करना चाहते हैं, आप किसी और डिज़ाइनर के कपड़े इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या होगा? You will increase the demand of other clothes for other designers, जिसकी डिमांड जो आपको ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आपका टेस्ट चेंज हो गया है, आप उस डिज़ाइनर के कपड़े दूसरे डिज़ाइनर के कपड़े आप पहनना चाहते हैं। तो टेस्ट जो है, इसी तरह खाने पीने की चीज़ों में भी आपका टेस्ट बदल सकता है। अगर आप ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हैं काफ़ी पीने के, तो आप यू कैन चेंज द टेस्ट, दिस चेंज इन टेस्ट कैन चेंज द चेंज ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू कैन शिफ्ट टू कॉफ़ी। इसी तरह अगर आप एप्पल आपका टेस्ट नहीं है तो आप यू कैन यूज़ ऑरेंजेस। सो चेंज ऑफ टेस्ट ऑफ ए कंज्यूमर कैन चेंज द डिमांड एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट अकॉर्डिंगली। अगर चेंज पॉजिटिव है, डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड हो जाएगा, और अगर चेंज नेगेटिव है तो डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट। तो हमने ये देखा कि अगर लोगों का टेस्ट चेंज होता है, जो मज़ा है किसी चीज़ को लेने का, इंजॉय करने का, उसको यूज़ करने का, उसको इस्तेमाल करने का, उसमें तब्दीली आती है तो डिमांड पे असर पड़ता है। अगर चेंज पॉजिटिव है, अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो उसकी डिमांड आप बढ़ा देते हैं, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर आपको उस चीज़ में मज़ा कम आ रहा है और आप कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है और डिमांड का अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो दिस वाज अनदर डिटर्मिनेंट, ये एक और फैक्टर्स था, एक और पैरामीटर था जो कि डिमांड को इफेक्ट कर सकता है प्राइस के अलावा, और डिमांड ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकती है। एक और जो फैक्टर है जो डिटर्मिनेंट है डिमांड का, वो है एक्सपेक्टेशंस। जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो तवक्कुआत हैं, वो भी कंज्यूमर की डिमांड को चेंज या तब्दील कर सकती हैं। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करे, अगर आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में अगर उस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हाल में एट प्रेजेंट क्या होगा, उस चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस कैन आल्सो चेंज द डिमांड। एंड सिमिलरली इफ़ यू एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में उस चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी तो क्या होगा, आप प्रेजेंटली हाल में उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं। सो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर कैन आल्सो चेंज द डिमांड। जो तवक्कुआत हैं बायर्स की, कंज्यूमर की, उसको इफेक्ट कर सकती हैं और डिमांड कर्व अकॉर्डिंगली ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है। आगे हम बात करते हैं आखिरी डिटर्मिनेंट्स की, लास्ट डिटर्मिनेंट की, जो डिमांड को चेंज कर सकता है, डिमांड कर्व को शिफ्ट कर सकता है ऊपर नीचे, वो है नंबर ऑफ बायर्स का, पॉपुलेशन का। अगर किसी मुल्क की आबादी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं, तो नेचुरली क्या होगा, चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो, नंबर ऑफ बायर्स कम हो जाते हैं, पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और जो चीज़ की तलब है वो कम हो जाएगी और डिमांड कब नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बायर्स और द पॉपुलेशन इज आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर है, ऐसा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, पैरामीटर है जो कि तलब को असरअंदाज कर सकता है और डिमांड कर्व ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है।
सो देयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ माय टुडेज लेक्चर। यहाँ पे आज का लेक्चर हम ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे 2 से 4 मिनट के लिए कि आज हमने क्या सीखा इस लेक्चर में। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस लेक्चर के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा वो था जो कि हमने कंटिन्यू किया पिछले फर्स्ट लेक्चर को, और फर्स्ट लेक्चर का कुछ पार्ट रहता था उसमें मुकम्मल किया, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। और हमने बात की यहाँ पे कि हाउ इकोनॉमिस्ट थिंक, एंड हमें कैसे सोचना चाहिए, इकोनॉमिस्ट की तरह सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, और कैसे बिहेव करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि एग्जाम्पल दी बेसिकली मॉडल्स की, बेसिक मॉडल्स की, किस तरह इकोनॉमिस्ट चाहते हैं, हाउ दे वांट टू एक्सप्लेन द वर्ड, हाउ द वर्ड शुड लुक लाइक। तो 2 मॉडल्स की हमने बात की, हाउ द इकोनॉमी शुड वर्क। उसमें एक मॉडल हमने जो पढ़ा वो था सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम, जिससे हमें पता चला कि इकोनॉमी किस तरह काम करती है। हमने उसमें देखा एक तरफ हाउस होल्ड्स है, दूसरी तरफ फर्म्स हैं, ऊपर फैक्टर्स मार्केट है, नीचे प्रोडक्ट मार्केट है। तो हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं रिसोर्सेज फैक्टर्स टू दी फर्म्स थ्रू प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर्स मार्केट, वो उन फैक्टर्स को यूज़ करके चीज़ों को बना रहे हैं, चीज़ें वो सप्लाई करते हैं गुड्स मार्केट में जहाँ से हाउस होल्ड ख़रीदते हैं। अब हाउस होल्ड जब ख़रीदते हैं तो वो उनकी जो है ना कंजम्पशन होती है, उनकी स्पेंडिंग होती है, वो रेवेन्यू बनता है फर्म्स का। अब जब फर्म्स के पास पैसे आते हैं तो वो रिवार्ड देते हैं, वो उजरत देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो कि हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं। और हमने देखा कि मज़दूर की जो उजरत होती है वो वेजेस होती हैं, मजदूरी होती है। कैपिटल को हम इंटरेस्ट रेट जो है, जो रेंट है जो लैंड का, उसका बिल्डिंग का, उसको रेंट की फॉर्म में लैंड रिवार्ड मिलता है। तो दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। एक साइड पे हाउस होल्ड, दूसरी साइड पे फर्म्स, ऊपर प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट है, नीचे प्रोडक्ट मार्केट है। उसके बाद हमने देखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। इकोनॉमिस्ट डिसएग्री करते हैं सम टाइम विद द स्टेटमेंट एंड सम टाइम एग्री विद द स्टेटमेंट्स। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर जिसमें हमने बात की मार्केट फोर्सेस की, हमने कहा 2 इम्पॉर्टेंट मार्केट फोर्सेस हैं जिसके बारे में इकोनॉमिस्ट अक्सर बात करते रहते हैं, और वो कौन सी फोर्सेस हैं? सप्लाई और डिमांड है। हमने डिमांड से शुरू किया आज लेक्चर, सप्लाई की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमने देखा कि हमने डिफाइन किया, हमने बताया कि व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड क्या है? बेसिकली डिमांड इज़ द ability and willingness of a consumer to buy a product. So how much consumer demand of a certain product and how much he is able and willing to purchase a certain product, that is known as the demand. उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड की बात की कि जिसमें हमने बताया जो डिमांड है, जो प्राइस है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है उसमें, और अगर प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। इस फिनोमेना को हमने डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया, इस फिनोमेना को हमने टेबल के ज़रिए भी एक्सप्लेन किया, और हमने उस टेबल के ज़रिए एक ग्राफ बनाया, एक लाइन ड्रॉ की जो कि डिमांड कर्व कहलाती है, जो कि हमें बताती है कि रिलेशनशिप जो है डिमांड और प्राइस के दरमियान नेगेटिव है। उसके बाद हमने बात की कि व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो कंज्यूमर जो है उसी एक डिमांड कर्व पे रहता है from and he moves from one point to the other point and buy a different quantity of a product. तो जो चेंज आती है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज नोन एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बट अगर डिमांड में चेंज आती है किसी और फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं आती, तो उनको हम वो जो चीज़ें हैं, वो जो फैक्टर्स हैं, दैट विल ब्रिंग ए शिफ्ट in the demand curve upward or downward. उसमें हमने कौन से फैक्टर्स देखे? हमने कहा कि एक इनकम ऐसा फैक्टर है दैट कैन ब्रिंग ए चेंज इन कंज्यूमर डिमांड। अब हमने देखा कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, जब इनकम कंज्यूमर की कम होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। फर्दर हमने देखा कि देयर आर 2 सॉर्ट्स ऑफ गुड जिस पे इनकम का असर हो सकता है। उसमें एक जो है नॉर्मल गुड्स, कुछ गुड्स जो नॉर्मल गुड्स होती हैं, कुछ इन्फीरियर गुड्स होती हैं। जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उसके केस में जो डिमांड का, जो इनकम का इफेक्ट है डिमांड पे पॉजिटिव है। अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाती है, अगर इनकम कम डिमांड कम हो जाती है।
इसी तरह इन्फीरियर में नेगेटिव है। उसके बाद दूसरा डिटर्मिनेंट्स हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का। इसमें हमने सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं, अशिया ऐसी होती हैं जो एक दूसरे का मुतबदल होती हैं, उनका उन गुड्स की प्राइस का डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि लाजिम मंजूम होती हैं, उनमें से किसी अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। उसके बाद हमने टेस्ट की बात की कि टेस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिमांड को इफेक्ट कर सकता है। अगर आपका टेस्ट कंज्यूमर का चेंज होता है किसी प्रोडक्ट का, किसी गुड का, किसी चीज़ का, किसी एशिया का, तो वो दूसरी चीज़ की तरफ राग़िब होता है और दूसरी चीज़ को डिमांड करता है, खर्च करता है, तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशन जो है कंज्यूमर की, वो भी इफेक्ट कर सकती हैं डिमांड को। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करते हैं कि फ्यूचर में किसी चीज़ की प्राइस कम या ज़्यादा हो जाएगी, तो हाल में जो उस चीज़ की डिमांड जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स की जब हमने बात की, तो ये जो नंबर ऑफ बायर्स कैन आल्सो अल्टर द चेंज इन डिमांड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अब हम ख़त्म करते हैं अपने लेक्चर को और यहीं से हम शुरू करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि आपको पहले रिवाइज कर लें, थोड़ी सी समराइज कर लें 5 से 10 मिनट में, एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। अभी आज का जो लेक्चर हमने पढ़ा ये चैप्टर 4 है, जो कि हमने रिकमेंड टेक्स्ट बुक है आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़ चैप्टर 4 और 5 पढ़ के आइएगा। अगर आप इसको पढ़ के आएंगे तो आपको ज़रा समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर आज का ख़त्म करते हैं इन अल्फाज के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।